समस्त को आम यूट्यूब चैनल लिखन प्लस को स्वागत। ये वीडियो आम आज जो एसएसबी तरफ होता पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल रे जो एग्जाम टी होता 150 मार्क रो एवं 2 घंटा जार समय थिला से एग्जाम टी जो क्वेश्चन सब आसीथिला तार आज आंसर गुडी को हम एनालिसिस करिवु। तो प्रथमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 1, the indifference curve for the two normal goods that are perfect substitute is। तो आम जानिचु नॉर्मल गुड्स जदि जेटा परफेक्टली सब्स्टिट्यूट थांती ताहले सेटा ए भलिया डाउनवर्ड स्लोपिंग हेतिबो ता सहित स्ट्रेट लाइन हेतिबो किंतु परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट रे एल शेप्ड एमती हेतिबो। तो ये राइट आंसर हबो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तापर रही क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू ए कर्विलिनियर डिमांड कर्व the price elasticity of demand at the point of tangency is। तो ताहले ठीक क्वेश्चन टी आसी जदि गोटे डिमांड कर्व थी गोटे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को ये जगह मन कर टेंजेंट होउची बा टेंजेंट होगी जाउची ताहले से पॉइंट रे मन कर पी से पी पॉइंट रे इलास्टिसिटी दुई जनकर समान हेबो ना अलगा हेबो ना आउ किछि हेबो। तो यार राइट आंसर हेबो दुई जनकर इलास्टिसिटी समान हेबो ऑप्शन डी सेम फॉर बोथ द डिमांड कर्व्स। तापर आछि द एंजल कर्व फॉर ए नॉर्मल कमोडिटी इज। नॉर्मल कमोडिटी पई एंजल कर्व टी अपवर्ड स्लोपिंग ही थाय हम जानिछु अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व कोन एंजल कर्व होची इनकम आउ क्वांटिटी केते रही छि ता भीतर रिलेशनशिप देखाई थाय। नॉर्मल कमोडिटी ताहले एंजल कर्व टी ए भलिया एंजल कर्व इसी ए भलिया अपवर्ड स्लोपिंग ही थाय। क्वेश्चन नंबर 4 रही छि एठी, if by increasing 1 unit of capital a firm gives off 2 unit of labor and produces the same level of output then MRTS of capital labor is equal to। जदि गोटे फार्म तार गोटे यूनिट कैपिटल गोटे यूनिट कैपिटल चेंज करिया पई केते यूनिट लेबर चेंज करूची ना 2 यूनिट गोटे यूनिट लेबर चेंज कैपिटल चेंज करिया पई 2 यूनिट लेबर चेंज करूची ताले कैपिटल और लेबर जो रेशियो केते होउची 1:2 व्हिच इज इक्वल टू 0.5। तो यार राइट आंसर हबो 0.5 ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर होउची 4 नंबर क्वेश्चन आंसर होउची ऑप्शन 2 काहे कि ना एमआरटीएस रो फार्मूला होउची मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ताले से दुईटी गोटे कैपिटल चेंज करिया पई दुईटी लेबर चेंज करू अछि। तो एठारे हबो आंसर ऑप्शन बी 2 गोटे यूनिट कैपिटल पई दुईटी लेबर से सब्स्टिट्यूट बा गिव अप करिया पई चाहूची सेत पई यार आंसर हबो ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 5 रही छि, an optimum farm produces at a level of output at which। तो यार आंसर हबो ऑप्शन बी मिनिमम ऑफ एसी एवरेज कॉस्ट रो मिनिमम पॉइंट सब ऑप्टिमम लेवल प्रोड्यूस होता है एवं एटा केवल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू सही मार्केट रे ही ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्यू स्टार प्रोडक्शन हो पारि थाए अन्य मार्केट रे हुए नहीं कारण जमती कि मोनोपोलिस्टिक हो गला कि मोनोपोली मार्केट तार एवरेज रेवेन्यूटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एवं सी तार एवरेज कॉस्ट रो लेफ्ट साइड रे मिनिमम रो लेफ्ट साइड रे टेंजेंसी करके जो इक्विलिब्रियम होता है तो सेटा ऑप्टिमम लेवल क्यू स्टार रु कम रे प्रोडक्शन होता है तो एटा ऑप्टिमम नुहे। तो ऑप्टिमम लेवल केतले जेते एवरेज कॉस्ट रो मिनिमम पर्सन बा ऑप्शन बी होची 5 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन टी अछि, अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर माने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एवं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एटा केमती ही थाए ऑप्शन सी होची तार राइट आंसर माने डिमिनिशिंग हेतिबो माने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कमी जाइथिबो एवं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कमिबो। क्वेश्चन नंबर 7 होची द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट ब्लिस। द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट ब्लिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन
तो राइट आंसर वो सोशल इंडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ऑप्शन ए. A monopoly firm would be in equilibrium at a point on its demand curve when the elasticity of demand is. तो यार राइट आंसर होची ग्रेटर देन यूनिटी माने एक रु अधिक इलास्टिसिटी से पर्सन रे प्रोडक्शन होता है. यार एक्सप्लेनेशन आम पूर्व वीडियो ऑलरेडी कर देचे. कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासाई रेंट मीन्स क्वासाई रेंट रो कॉन्सेप्ट कौन जिते बड़े किसी फैक्टर जो मानक सर्ट रन रे तांकर सप्लाई कर्वटा फिक्स्ड थाए किंतु लॉन्ग रन रे चेंज हो जाए तो से माने सर्ट रन रे रेंट पाई थांती किंतु लॉन्ग रन रे रेंट पाती नहीं सेटा कहै क्वासाई रेंट. क्वेश्चन नंबर 10 ए सिचुएशन इन व्हिच इट इज पॉसिबल टू मेक समवन बेटर अप विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स अप. एमती गोटे सिचुएशन जो कि आम जड़े व्यक्ति को बेटर अप करिपरिबा विदाउट मेकिंग समवन वर्स अप से सिचुएशन हम ऑप्शन सी पारेटो इनएफिशिएंट. जदि इम्पॉसिबल था ये जगह जब इम्पॉसिबल लिखाई था ताहले सेटा होता पारेटो एफिशिएंट. तो ये पॉसिबल अच्छी ताहले सेटा पारेटो इनएफिशिएंट पॉइंट. देन क्वेश्चन नंबर 11 नेशनल इनकम इज इक्वल टू. तो राइट आंसर हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 12 द डिफरेंस बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आम जानी चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. Net factor income from abroad option D. Question number 13 for a linear consumption function passing through the origin जब गोटे linear consumption function जी की origin को पास करे जाए तो C is equal to y एठी तो एठी APC is equal to MPC average propensity to consume is equal to marginal propensity to consume. तो आंसर होची ऑप्शन C. Question number 14 the coefficient of investment multiplier is कोफिशिएंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सेटा होची केते 1 बाय एमपीएस. तो एटा इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीएस. यार राइट आंसर हम 14 रो ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इनवर्स रिलेटेड टू एमपीएस. द बुक एंड आउटलाइन ऑफ मनी के लिखिथिले एको लिखिथिले जीएफ क्राउदर ऑप्शन ए होबे राइट आंसर. Question number 16 the intersection point of IS and LM curve denotes. IS and LM curve जो इक्विलिब्रियम सेटा सब बोथ गुड मार्केट और मनी मार्केट दीटा इक्विलिब्रियम को देखाई था. तो ऑप्शन डी होबे राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 a growing country is one with rising GNP at constant price. राइजिंग जीएनपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस करंट प्राइस की कॉन्स्टेंट प्राइस रे हबो एटा करंट प्राइस रे हबो नाही. तापर पचारछि इन्फ्लेशन गैप केते आस्ता व्हेन देयर इज एन एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट पोटेंशियल डिमांड ड्यूरिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 19 प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग each consumer the reservation price ताको कहा जाए फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 20 इन्फ्लेशन इज अनजस्ट डिफ्लेशन इज इनएक्सपेडिएंट ऑफ द टू डिफ्लेशन इज वर्स. एको कहिथिले जे.एम. केन्स ऑप्शन बी. द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन इज बेस्ड ऑन कैश डिपॉजिट इन द बैंक. The Phillips curve shows the trade-off between Phillips curve टा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर ट्रेड-ऑफ को देखाई थाए. तापर आसीबा 23 नंबर क्वेश्चन the balance of trade is known as visible balance. Question number 24 which of the following is not a non-monetary measure of correcting adverse balance of payments. तो यार आंसर हम 24 नंबर ऑप्शन डी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज गोटे नॉन मॉनिटरी मेजर नुहे. क्वेश्चन नंबर 25 पचारछि इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.2 एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 5 ताले स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 4% कारण एमपीएस हरण कैपिटल आउटपुट रेशियो होची तार फॉर्मूला ग्रोथ रेट रो जोटा कि 0.2 हरण 5 तो यार आंसर अब 4%. Which of the following is not a obstacle of economic development? Question number 26 रो आंसर होची ए
हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोटे ऑब्स्टकल्स नुहे बरं गोटे एटा इज ए पॉजिटिव फैक्टर टू द डेवलपमेंट. Human poverty is related to denial of choice and opportunities. Planning Commission was scrapped in the year 2014 रे प्लानिंग कमिशन स्क्रैप करा जायतिला जहाँ फल नीति आयोग आसीथिला. ग्रांड इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय को लॉन्च करथिले नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से ग्रांड इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करथिले. पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द डाटा रिलेटेड टू कंजप्शन डाटा को लेकिन पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करा जाय थाए. Question number 31. When the actual growth rate is greater than warranted growth rate, when actual growth rate is greater than warranted growth rate, सेतेबेले कोन होबा हमर इन्फ्लेशन हे थाए. तो राइट आंसर हबो ऑप्शन ए persistent inflation. तापर पचारछि which of the following statement gives the true picture of effect of central bank selling securities in the market. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ସେଲ୍ କରୁଛି ମାର୍କେଟରେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କ୍ରେଡିଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଦ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫଲ୍. ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି. ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଲୋନ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର. ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର କେବେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଲୋନ୍ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ. Then the optimum size of public budget is determined at the level where MSB is equal to MSS. Marginal MSB is equal to MSS. 35. The ultimate principle of taxation is equal marginal sacrifice principle. Question number 36. When the demand for a commodity is inelastic, the burden of taxes is more on the buyer. In which currency market to ensure that same amount of foreign currency is transacted at a future specific date, the buyer and the seller of the currency can enter into the alternative contracts. Right answer hobo यार ऑप्शन बी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. 38 होची द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया इज सर्विस सेक्टर. 39. When the LM curve is vertical, the increase in the money supply will lead to a fall in interest rate. Question number 40. Which of the following is a specific scheme for promotion of food security for senior citizen? यार राइट आंसर होची अन्नपूर्णा स्कीम. तापर एमआरटीपी वाक्ट केबे अबोलाइज्ड करा जायथिला तो एटा 1991 मसिया रे अबोलाइज्ड हितला. Of the following terms, which is the largest foreign exchange earner of India? Right answer is textiles. The spirit of Angel's law is that when an increase in family's income, now with an increase in the family's income, the proportion of income spent on food declines. Option C. The Employment Guarantee Act ensure work for a minimum period of 100 days in a year. Option B. In the uneconomic zone of production, the marginal productivity of one of the factor is negative. Which of the following program is designed for the development of women and children? DWCRA. A linear regression model is the linear in parameter only. Question of 48. The next round of WTO meeting is scheduled to be held at UAE, Abu Dhabi, UAE. Question number 49. Under perfect competition, if the total cost of the farm is 0.3x square minus 3x square plus 20x plus 15, then the farm supply of the farm when P is less than 12.5. Right answer is 0.
Then crowding out effect implies increase public sector spending replaces or drives down the private sector spending. Question number 51. Trade cycle is purely a monetary phenomenon. Who said this? It is said by Hotre. Speculative demand for money is interest elastic. Option B is the right answer. Need for stronger banking system for which merger of public sector banks and financial institutions were suggested. It was recommended by Narasimha Committee second. Question number 54. Money is link between present and the future. The reason is money is the store of value. The right answer is both A and assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Question number 55. Terms of trade is defined as the ratio index of export price and index of import price. Question number 56. The investment limit on the plant and machinery for the small scale manufacturing industry in India is 10 crore. B. If a card is chosen at random from a standard pack of cards, what is the probability of getting a 3 or 7? This is 8 by 15. A common property resource is non-rival and non-excludable. Which of the following is means of combating negative externalities? Pigouvian tax. Normal distribution. The 50th percentile is equal to the z-score of 0. The criteria carries maximum weight under 15th Finance Commission is income distance. When a linear consumption function shifts downwards in a parallel manner, the investment multiplier will be remains as before. That means remains constant. 63. What is the rank of India in the milk production? The first. FRBM committee recommended center's debts to GDP ratio to be 40%. Who coined the word Hindu growth rate? Raj Krishna. Who recommended MSP and issue prices? CACP, Commission for Agriculture and Cost Prices. Primary deficit refers to the difference between fiscal deficit and interest payment. Which of the following is an example of transfer payment? Payments of old age pension. Government of India earns maximum revenue from which of the following sources? Corporate tax. India's growth rate during 22-23 was 7.2%. Which of the following is not a goods and services tax in India? DGST. Which of the following constitute FDI? Both buying a company in a foreign market in a foreign country, investing in the capital market of a foreign country. 73. Special Economic Zone Act became effective in 2006. The concept of sustainable development refers to intergenerational equity. Then 75. Headquarters of World Bank is located at Washington, DC. Basel II related to adequacy of bank's capital. The term paper gold means special drawing rights. Unbalanced growth rate was popularized by A.O. Hirschman. Which of the following product is not usually exported from India? Pulses. Out of 150 employees of a company, 30 are supervisors, 80 are married, and 20% of the married employees are supervisors. If an employee is chosen at random, what is the probability that he is married and a supervisor? The right answer is option B, 0.1067. The idea of creative destruction is associated with Schumpeter. According to Robinson, the term golden age in the context of Harrod-Domar model is used to emphasize its
mythical nature. Inequality in income in a free economy is due to private property and inheritance. National Education Policy 2020 states that learning should be experiential. Which of the following is not a commitment of Janani Sishu Suraksha Yojana? Provide food grains freely to expecting mothers. Monetary base of an economy is the amount of currency held by the public and banks as reserves. Which of the following is not a dimension of HDI? Ability to access clean environment. The planned holidays in India was 1966 to 69. Which of the following cooperative society is responsible for the production of fertilizer? Option B, IFCO. The Blue Revolution is related to fish production. The number of women entrepreneurs in small industrial sector is highest in the state of Tamil Nadu. The Raulkela steel plant was set up. The Raulkela steel plant was set up with the assistance of West Germany. A budget line is drawn taking X in the horizontal axis, Y in the vertical axis. Price of good X declines, price of good Y remaining the same. What will happen to the budget line? It becomes flatter. Sunrise industries are those which have high growth potential and can meet future requirement of economy. Question number 95. The unholy trinity, which is also called impossible trinity, states that it is impossible to have which of the following three at the same time? Free capital movement, free capital flow, fixed exchange rate, and sovereign monetary policy. Which of the following is not a problem of SSIs, small scale industries? Strikes and lockouts. Cost theorem tells us that if external cost is produced, then under certain conditions private parties can arrive at an efficient solution without government intervention. Non-performing assets in commercial banks means loans in which interest and principal are not recovered. The motto of G20 18th meeting is One Earth, One Family, One Future. The banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total asset. This is called statutory liquidity ratio. तो यहाँ थिला 100टी क्वेश्चन आंसर गुड़िक जदि आपको भिडियोटी भल लगी ताहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू।